Thereafter, dispense flares. Once again, a big round of applause for our C-295. Now that the Garuds have secured the area, they are asking for a strike from attack helicopters to crush the morale of the enemy. This is CASEVAC, matlab casualty evacuation. It involves the movement of injured to and between medical treatment facilities. A seamless air medical chain that ensures the point of injury is the start of recovery, not the end of the road. And this commitment extends beyond the soldier. It extends to every citizen. याद कीजिए सूडान का ऑपरेशन कावेरी, या यूक्रेन का ऑपरेशन गंगा, या इजराइल का ऑपरेशन अजय. दुश्मन के लिए हम काल हैं और अपनों के लिए ढाल. We strike hard and we save harder. From the shadows of covert ops to the glare of global disasters, we are the first responder. Remember Turkey, Operation Dost and Operation Sagar Bandhu in Sri Lanka? क्योंकि दोस्त सिर्फ नाम नहीं, हमारा ईमान है. From special ops to strike fear, to CASEVAC, to save lives. Not just our mission, it is our unwavering commitment, whether in the heart of battle or across the global horizon. We ensure no one is left behind. This is our promise. हर जवान, हर नागरिक, हर सांस, हमारा वादा. And tactical extraction of our injured troops. Like a shiny star in the sky with searchlights on. With air supremacy firmly established over enemy airspace, the skies are fully under our control. Taking your attention at 2 o'clock, a courageous team of 4 Garuds and 4 commandos will slither down from a Mi-17 helicopter under the cover of darkness. Swiftly securing the area, they will be rescuing hostages from enemy clutches. आपके सामने भारतीय वायुसेना के जाबाज गरुड़ और भारतीय थल सेना के 10 पैरा एसएफ की टुकड़ी कंधे से कंधा मिलाकर कार्रवाई कर रही है, जिससे वह आतंकवादियों से बंधकों को सुरक्षित निकालेगी. घने शहरों और कठिन भूभाग में साहसिक प्रवेश, अचूक कार्रवाई और लक्ष्य पर निर्णायक नियंत्रण, यही है सच्ची संयुक्तता की शक्ति. कमरे हर कोना सुरक्षित किया जा रहा है, हर हरकत सुनियोजित, हर कदम घातक और नियंत्रित. ये दृश्य हमें 26/11 मुंबई हमले के दौरान कमांडोज द्वारा किए गए साहसी प्रवेश और बंधकों को सुरक्षित निकालने की याद भी दिलाता है, जिसने संकट की घड़ी में राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित की. आतंकियों का सफाया कर बंधकों को सुरक्षित रूप से मुक्त कर दिया गया है और बाहर लाया जा रहा है. जोरदार तालियां हमारे जाबाज कमांडोज के लिए.
Now shift your gaze 2 o'clock on ground. Portable Mobile Hospital, Bhishma. Bharat Health Initiative for Sahyog Hita and Maitri is deployed and treating casualties. Bhishma is a cube-based emergency medical response unit compact enough for rapid airlift yet comprehensive to establish functional field hospital to safely evacuate them from the enemy. दुश्मन का मनोबल टूट चुका है। अब भारतीय वायुसेना दुश्मन के क्षेत्र में और अधिक घातक प्रहार कर उसकी युद्ध क्षमता को पूर्णतः समाप्त करेगी। We see the advanced light helicopter called sign Khanjar. Rockets fired. "24 rockets rain down with deadly precision. Like the Indian Air Force, Khanjar strikes true every time." Next in action is the Su-30 MKI, called sign Gada. It will be coming from left and will engage an enemy logistics cluster located at 1 o'clock, 3 kilometers. As the mission unfolds, Su-30 stands ready to project decisive combat power, combining innovation with lethal precision. This multi-role fighter aircraft ensures hostiles remain under constant threat, where friendlies receive unmatched aerial support. Su-30 is a true multi-role platform capable of delivering a wide array of air-to-ground munitions. Look towards your left. High. Su-30 is flaring and rolling in for a conventional dive attack. Steel and sky in perfect harmony. Keep looking at the target. Bomb's gone. And that's an accurate hit. Used by aircraft built for precision and grit, the strike by Jaguars is not about spectacle. It is about ending resistance, breaking hardened will, and reminding target critical defense installation left 10 o'clock.